Hello everyone, welcome to the online session of Manu Law Classes. My name is Brijesh, I am the English faculty at Manu Law Classes. In today's session, I am going to discuss 10 words which have been taken from the recent The Hindu newspapers. These are very important words because they have come in the article and different articles of editorial. So let us start. The first word, that is insipid, that is lacking the originality, dull and boring. So alone in the middle of the ocean, the survivor could think of nothing that would make the insipid day seem shorter. So कोई चीज जो boring हो, dull हो, that is insipid. So tasteless, unflavored and weak are the synonyms to this word. Insipid. Next word in the list is incisive, that is clear and direct, एकदम clear cut, right? Sharp. His explanation was pointedly incisive, leaving absolutely no room for doubt. So कभी कभी एकदम clear cut जवाब होता है जिसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है. So penetrating, acute and sharp are the synonym of this word. So penetrating, acute and sharp are the synonyms to this word incisive. The next word in the list is idolatry. Idolatry का मतलब होता है, सबसे पहले idol को समझते हैं. Idol का मतलब होता है मूर्ति, right? So idolatry मतलब किसी को बहुत ज्यादा सम्मान देना, किसी चीज को इतना ज्यादा सम्मान देना कि उसे भगवान का दर्जा देना, उसे बहुत ही ज्यादा respect देना. So that is idolatry. So to respect or worship someone or something. So it is sad how many people exhibit idolatry towards the celebrity. We had just discussed in the last video that under the term venerate, so youth are venerating a lot to the celebrities. On the other hand, there are army people who are saving our life, teachers who are building nations, and other people who are like saving the country are not that much getting fame that the ones who have materialistic thing, right? So idolatry is basically किसी को मूर्ति जैसा पूजना, बहुत ज्यादा सम्मान देना. So admiration, worship and reverence are the synonyms to this word idolatry. Next word in the list is disdain. Disdain means किसी चीज से नफरत करना, hate करना, right? So the feeling that something isn't valuable or worthy of respect. तो disdain मतलब ठीक है, किसी कोई मतलब की चीज नहीं है, ऐसा घृणा की भावना रखना, वैल्यू ना देना, right? Because he has an intense disdain for rap music. Grandfather gets angry every time we turn Drake on. So Drake is a kind of rap music. किसी भी चीज से अगर किसी को problem है तो जाहिर सी बात है that will irritate him, right? So that's why he disdains it. So scorn, slight and undervalue are the synonyms to this word disdain. Next word in the list is accolade. Accolade मतलब प्रशंसा करना, कोई गिफ्ट देना, अवार्ड देना, right? So acknowledgement or an award. During the monthly meeting, the company president will present an accolade to the employee of the month. ऐसा होता है कंपनीज में जिसमें कि employee of the month को रिवार्ड दिया जाता है ताकि अदर लोग जो हैं वो मोटिवेट हो और जिसने रिवार्ड पाया है वो और ज्यादा मेहनत से काम करे, right? So honor, recognition and award are the synonyms to this word. Next word in the list is acrid. Acrid means bitter and unpleasant in taste और स्मेल. एसिडिक, राइट? कोई चीज जो कड़वा मतलब खराब सा टेस्ट करे, जैसे पेट्रोल की स्मेल हो गई या एसिड का स्मेल हो गया, दैट इज acrid. So when the student accidentally mix the wrong chemicals, केमिस्ट्री के लैब में ऐसा पाया जाता है, an acrid scent filled the lab and sent people running into the halls. होता है ऐसा sometimes, कुछ ऐसा गड़बड़ सा रसायन मिला देते हैं, केमिकल्स मिला देते हैं जिसकी वजह से ऐसा स्मेल पैदा होता है. So pungent, again bitter and acidic are the synonyms to this word acrid. The next word in the list is adjunct, मतलब something that is supplement. So something that is joined or added to another thing but not a part of whole. इससे सिंपली आप समझ सकते हो जैसे कि हम लोग पेपर लिखते समय पेपर खत्म हो जाता है, we ask for another paper, right? Supplement. So that is the adjunct. My math teacher was adjunct faculty and did not work for the school for the full time. So यहाँ पे adjunct का मतलब होता है कि एक मैथ टीचर जो है ऑलरेडी वहाँ पे फ्रीलांस मैथ टीचर भी आए हुए हैं, that is adjunct, right? So supplement, addition and complements are the synonyms to this word adjunct. The next word in the list is bolster. दो तरीके से इस्तेमाल होता है. पहला bolster मतलब वो गोल वाला जो तकिया होता है जिसे सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं. On the other hand इसे एज अ वर्ब भी यूज किया जाता है. bolster means to support, right? So to make something stronger or bolder, किसी चीज को स्ट्रॉन्ग करना सपोर्ट करके एंड मजबूत बनाना. So raising your voice is not a good way to bolster your position during an argument. देखा होगा कभी कभी लोग जब आर्ग्यूमेंट होती है तो काम वे में आर्ग्यूमेंट नहीं करते, चिल्लाते हैं,
ताकि वो और ज्यादा बोल्स्टर कर सके अपने आर्गुमेंट को, सपोर्ट कर सकते अपने आर्गुमेंट को प्रूफ करने के लिए। सो पिलो, पिलो जैसा कि मैंने बताया, क्वेश्चन एंड सपोर्ट एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब। नेक्स्ट वर्ड इन द लिस्ट इज ऑरेटर। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑरेटर होना बहुत बड़ी कला है। स्टेज पे बोलने वाला व्यक्ति को ऑरेटर बोलते हैं, कोई व्यक्ति जो बोलने में माहिर हो, ऑरेटर। एज अ लॉयर, जब आप लॉयर बन जाएंगे, और एज अ लॉयर अगर आप लॉयर हो तो आपको पता है सबसे पहली जो जिसे आप प्री रिक्विजिट कहोगे एज अ टू बिकम अ लॉयर इज ऑरेटरी। आपको बोलने आना ही चाहिए, राइट। Orator, one who excels at speaking at an audience. If you want to be a successful politician, you should strive to become a great orator so you can win votes with your words, right? Speaker, lecturer, and declaimer. Orator. The next word in the list and last word in the list is pacifist. पैसिफाई का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो शांत करता है, शांति को पसंद करता है। सो पैसिफिस्ट मीन्स अ पर्सन हु इज अ पीस मेकर। पैसिफायर जो शांति रखने में विश्वास रखता है, राइट। सो पैसिफिस्ट वन हु लव्स, सपोर्ट्स एंड फेवर्स पीस ओवर वायलेंस। कोई व्यक्ति जो शांति को पसंद करता है। So the example is the pacifist was rewarded by his college for being a peacemaker, है ना। कोई व्यक्ति जो शांति रखने में विश्वास रखता है उसे ही रिवार्ड देंगे, राइट। So peacemaker and pacifier and dovish. Dovish कैसे बना हुआ है? Dove एक व्हाइट कबूतर होता है जिसे शांति का प्रतीक माना जाता है। The word comes from that. So dovish मतलब ऐसा व्यक्ति जो शांति को सपोर्ट करता है। All right, everyone, I hope you have understood all the words discussed in this video. Follow for more words and also do check out the list that is there for vocabulary. These words will help you definitely in your upcoming examinations. All the very best for upcoming examination. Thank you so much for watching the video till then. All the best.